Good evening, everyone. Welcome to the Diyas for Puja candle making class. My name is Dilpreet Kaur, and with me today we have a Sue candler whose name is Arzu Amit Munshi. So Arzu has been helping me throughout these days to prepare for this workshop, as this is something very creative, and I'm sure each one of you would love attending this workshop and then making diyas for yourself. Before we go further, let's just get little introduction about each other and understand what kind of audience do we have. How many of you are there who are candle makers, and how many of us there who are here only for just a fun learning? So if you are an existing candle maker, please type C, एंड अगर आप यहाँ DIY या फन के लिए हैं या कुछ नया सीखने के लिए हैं तो आप DIY टाइप कीजिए. लेट्स जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस डू आई हैव, एंड मे बी देन आई कैन टॉक अकॉर्डिंगली. Wow, so many candle makers. Wonderful. So, any one reason why you felt the need of learning this? Uh, was it like just for fun, or you thought कुछ एडिशन हो जाएगा? आपका रीजन क्या था यहाँ आने के लिए? Please comment and let me know, because it's really exciting to see that I have so many members out here who are already into the journey of candle making. Addition, very nice, wonderful, great, wonderful. So somebody is here for Diwali prep, कोई DIY के लिए है, कोई अपनी प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज करने के लिए यहाँ आया है. आई एम श्योर, बट हम सब यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग सीखने के लिए आए हैं. सो यही मेरी कोशिश रहेगी कि इस पूरे 2 घंटे की क्लास के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करें. आई नो ईच वन ऑफ अस आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव, और हम बहुत सारी क्रिएटिव चीजें करते हैं, बट यहाँ मेरी कोशिश रहेगी कुछ वैल्यू ऐड करने की. ठीक है? सो व्हाई डिड आई चूज दिस वर्कशॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आज से नवरात्रा शुरू है, और नवरात्रा से अब एक नई शुरुआत होने वाली है. स्पेशली इंडिया में, पूरे इंडिया में हर जगह हम फेस्टिवल्स की शुरुआत कर रहे हैं. आज से दिन चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको वेदर में फील चेंज होनी शुरू हो जाएगी, and everything positive starts surrounding us. When you do something creative, it adds on to the positivity. Why diyas? हर तरीके के ओकेजन के लिए जब भी हम कोई पूजा करते हैं, कोई भी पॉजिटिव नोट पे काम करना शुरू करते हैं, दियास हमेशा लाइट करते हैं. ट्रेडिशनली आई नो हम ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, बट वैक्स इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेट. अगर आप नेचुरल वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल ऑल्टरनेट फॉर ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू बीन यूजिंग. Fire is an element which is extremely beautiful because it transforms the energy. जहां पर भी फायर फैक्टर आता है, वहां पे आप बदलाव को महसूस कर सकते हैं. आप इमेजिन करके देखिए, आप कहीं पे भी फायर लाइट करेंगे, किसी भी चीज के साथ अगर आप फायर को रखते हैं तो क्या होता है? The moment fire comes in contact with anything, it changes the existing form of that thing. अगर इस कागज के ऊपर आग लगेगी तो ये राख बन जाएगा. कपड़ा exactly the same. किसी भी चीज को आप फायर के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. इसीलिए किसी भी तरह की पूजा, किसी भी तरह का हवन, या किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिव काम करने से पहले या करते हुए लैम्प, यज्ञ, तब जिसको कहते हैं यज्ञ कुंड कहते हैं, फायर को इंक्लूड किया जाता है रिचुअल्स के अंदर. That is also one of the biggest reason candles are involved in rituals. And
because the source of oils can differ. Carrying oils and using oils can be a little difficult, but candle is extremely easy to handle. And of course, it lasts for a longer period of time. Today, we are going to take plain, raw uh, clay pots and transform them into something really pretty. ठीक है? यहाँ पे endless options है. मैं इस क्लास के अंदर थोड़ी सी कुछ options आपके साथ share करूंगी, which we can do during this 2 hours of time. Going beyond this, of course, you can do that, no problem. So, किस तरीके के दिए? I personally feel दियाज जो है अब इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे सबसे ज्यादा बिकते हैं, सबसे ज्यादा उनकी डिमांड होती है, सिंपली बिकॉज दिस इज द फेस्टिवल वेयर पीपल वांट टू बाय थिंग्स इन बल्क. ज्यादा से ज्यादा चीजें लोग खरीदना चाहते हैं, ज्यादा कैंडल्स, ताकि डेकोरेशन के काम आए. थ्रू आउट द ईयर अगर हम कैंडल सेल्स की बात करें तो मोस्टली कैंडल्स ऐसी होती हैं कि सेंटेड कैंडल्स होगी, बड़ी कैंडल्स होगी. बट अगर दिवाली के टाइम पे हम बात करें तो यहाँ वी इट द साइज इज नॉट द ओनली क्वेश्चन, whereas we also think प्राइस क्या है. ऑफ कोर्स लुक मैटर करती है, आंखों को कुछ भाता है तभी हम उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं. सो साइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट एट द सेम टाइम यू नो इसका बहुत बड़े बड़े साइजेस जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है इस टाइम पे उतनी नहीं सेल होती है. सो दियास, इफ बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर कैंडल मेकर्स हियर, द होल क्लास आई एम गोइंग टू नाउ ट्विस्ट अ लिटिल बिट एंड इट्स सरप्राइजिंग. मुझे लगा था कि आज बहुत सारे डीआईवाई लवर्स जो है वो आएंगे, बट टू माय सरप्राइज आई हैव सो मेनी कैंडल मेकर्स हियर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. I will try and add some aspects जिससे आप इसको monetize भी कर सके. आज सुबह ही I spoke to a lot of students where they said that exhibitions are coming, क्या बनाएं, कैसे रखें and all that stuff. So diyas are extremely good product to keep in exhibitions. आप इनको singles में बेचिए, sets में बेचिए. It looks very pretty and it gives you an upper hand to create good margins also. ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो आप इकोनॉमिकल कॉस्ट में इसको परचेज भी कर सकते हैं. आपका मेकिंग कॉस्ट भी जो है बहुत ह्यूज नहीं होगा. विद ऑल द थिंग्स जो मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ह्यूज नहीं होगा. इट ऑल डिपेंड्स आप इसके बाद आगे क्या क्या इनोवेशंस इसमें करते हैं. ठीक है, सो let's just start with today's first diya. Before I go further, this is what we made yesterday. So last night we were making this. This is a very big clay pot, जिसको हमने we turned it into a candle because I wanted to light this in my mandir, but somehow थोड़ा सा लालच आ गया. It is so pretty that I thought I'm going to keep it here only. Okay, so that I can show you all. And we made a lot of diyas like this, which my daughter made for her school. So let's just start with the first prep. So मैं यहाँ पे कैसे diyas use करने वाली हूँ. I'm going to use this different sizes क्योंकि not everyone will want bigger versions like these. ठीक है, but believe me, this is awesome. This looks really beautiful. So यहाँ पे मैंने ये simple plain दिए लिए हैं. ठीक है, ये दिए आपको कहीं पे भी आराम से रोड साइड पे मिल जाएंगे, right? And a beautiful way to give back to society also, because all these potters, they don't have much margins. And जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, एलईडी लाइट्स और कैंडल्स आती जा रही हैं, दियों का जो फैशन है वो थोड़ा कम होता जा रहा है. सो इफ यू आर बाइंग दीज दियास फ्रॉम द लोकल मार्केट, जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं, तो यू आर ऑल्सो गिविंग देम मनी, यू आर गिविंग देम बिजनेस. सो ये छोटे वाले दिए हैं जो नॉर्मल दिए हम घर में जलाते हैं तेल में, घी में. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कुछ ये बड़े वाले दिए लिए हैं. So yes, they were not painted. ये भी white plain
इसी तरीके के दिए थे ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ बड़े ये वेसल्स लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है। एक डिजाइन ये है, आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, आई हैड नो स्पेस, मेरे पास ऑलरेडी इतना सामान था, बट आई पिक्ड सो मेनी ऑफ देम बिकॉज हर स्कूल वांटेड and I was making it for few friends. I'm going to shop more, but if you see, this is so beautifully carved, है ना, and they're all handmade. So यहाँ पे इसके यहाँ पे भी डिजाइन है, and inside also there's a design. This one is different. इसके यहाँ पे इस तरीके से you see there is a design and it has a good depth. So I'm going to use this. This one also is the same design, but I painted this white. कुछ मैंने थोड़ा सा पहले पेंट किए हैं so that जब हम क्लास कर रहे हो we should have some option to start with, ठीक है। And like this, these are small diyas, right? These are small diyas, and इनको भी these are also created at home, okay? So let's just start. सबसे पहले the first and the first thing you need to do is you need to wash all these diyas nicely. अभी वैसे भी हम दियास को वॉश करते हैं, आई एम श्योर, बट अभी यहाँ पे इट्स लिटिल इम्पोर्टेंट। वन, इनके अंदर काफी डस्ट होती है, ठीक है। इफ यू स्टार्ट यूजिंग देम लाइक दिस, तो व्हेन यू यूज पेंट ऑन देम, पेंट आपका बहुत ज्यादा दरदरा हो जाएगा, फाइन फिनिश नहीं आएगी। सेकेंड, व्हेन यू एड वैक्स टू इट, होगा क्या कि आपकी वैक्स जो है वो भी सारी किरकिरी हो जाएगी। तो द मोमेंट यू गेट दीज दियाज, before you use them, wash them well and for at least half an hour soak them in water. अच्छे से इनको पानी में सोक करके रखिए। इससे क्या होगा, इसके बीच में काफी, मिट्टी के बीच में काफी पोर्स होते हैं। आप ऑब्जर्व भी करेंगे, जब आप इसको पानी में रख देंगे तो आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे, कुछ चिर 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 की आवाज आएगी। सो बेसिकली जितने भी पोर्स हैं वो एक बारी पानी से भर जाएंगे, और जब आप वैक्स पोर करेंगे या पेंट पोर करेंगे तो वो एकदम से सोक नहीं करेगा। ओके, सो विद क्ले पॉट्स दिस इज इम्पोर्टेंट because if you start using it directly, the effect and the paint observation, paint absorbed, this thing would be more. So we don't want that. Okay. So before we start, let's just ask the audience कि कौन से वाले दिए हम पहले करें, बड़ा वाला या छोटे वाले, क्योंकि हमको तो सारे ही बनाने हैं ना, तो कौन से वाले करें, कौन सा वाला दिया सबसे पहले बनाए? सो आई गिव यू द ऑप्शन, बिग, मीडियम, small. Which size should we start with? All right, great. So some are saying big, some are saying small. Nobody wants medium. All right, let's just start with the small one because small wins the majority. So I'm just going to keep all these pots on the side. Okay, इनको side पे रखते हैं. All right, I'm just going to make some space because I have limited space here. Let's just start. So यहाँ पे कुछ दिए अभी भी गीले हैं. I'm just going to keep them at the side. It's okay. ये आराम से सूख जाएंगे, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में सूख जाएंगे. So in case if you are in hurry, what you can do is take them out, keep them on a kitchen towel, switch on the fan for 5 minutes और ये अच्छे से सूख जाएंगे. ज्यादा देर नहीं लगेगी, 15-20 मिनट में सूख जाएंगे. अगर इससे भी ज्यादा जल्दी है तो सॉरी, थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा, है ना. सो व्हाट कलर्स डू वी यूज? ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कौन से कलर्स हमको यूज करने हैं. एक्रेलिक कलर्स यूज करेंगे, ठीक है. एक्रेलिक कलर्स क्यों यूज करेंगे? इसके कुछ रीजंस हैं. बिकॉज एक्रेलिक कलर्स जो हैं वो काफी उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक होती है, अच्छी होती है, गाढ़े होते हैं. यू कैन यूज वाटर कलर्स ऑल्सो,
कि आप वाटर कलर्स यूज कर सकते हैं, मनाही नहीं है। मगर होता क्या है, जब आप वाटर कलर यूज करते हैं, वाटर कलर्स में थोड़ा पतले होते हैं, द वाटर कंसिस्टेंसी इज हायर. सो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग वाटर कलर्स, लॉट ऑफ पेंट इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस स्पॉट. तो क्ले की वजह से, ये भी मिट्टी है, क्ले है, तो जब आप वाटर कलर यूज करेंगे तो काफी सारा कलर जो है ये एब्सॉर्ब कर लेता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप एक्रेलिक कलर यूज करेंगे, इट बिकम्स इजी, इट बिकम्स बेटर. ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप देम हियर. एंड any color you can take of your choice, no worries at all. Whatever color you like, red, blue, black, pink, white, whatever color you like, that's okay. Okay. You would need a paint brush. ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा ब्रश ले रही हूँ बिकॉज जल्दी काम हो जाएगा और कोई बात नहीं है. यू कैन टेक अ स्मॉलर और अ थिनर ब्रश ऑल्सो. एंड आई हैव few options here. यहाँ पे मेरे पास कलर्स की ऑप्शन है. आई हैव पिंक, आई हैव वाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक. ब्लैक आई थिंक पूजा में लोग थोड़ा सा वहन करते हैं, बट आई गेस आई मे नीड इट टू मेक सम डिजाइन्स. ओके. तो लेट्स जस्ट पेंट द दियास फर्स्ट. सो पहले इसका बेस तैयार करते हैं. बेस के लिए हमें इनको कलर करना पड़ेगा. ठीक है. आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसके ऊपर डेकोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज टू कलर द बेस, बिकॉज उससे क्या होता है कि द होल थिंग बेसिकली गेट्स कवर्ड इजिली. अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डेकोरेशन मटेरियल यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा you would need a lot of material. But when you paint it like this one, actually my idea was to decorate the whole thing in a very different manner. But when I painted this and I used this, it just became so beautiful that I felt like I don't want to do anything more in this. I don't want to go overboard and unnecessarily create इसके अंदर बहुत सारा सामान लगा के and all. So let's just paint our diyas. I'm not going to paint the base. You're free to do that. ठीक है. मैं पेंट इसका जो बेस है और से अंदर से नहीं करूंगी. अगर आप इनको सिर्फ डेकोरेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारे दिया मार्केट्स में हैं जो मिलते हैं, मोस्टली डेकोरेशन के लिए होते हैं, उसके अंदर फूल रखते हैं लोग. इफ यू आर डूइंग दैट, then please paint it from inside also. If you're not doing that, and if you're planning to add wax into it, then I would suggest don't use paint inside, because it's of no point. आप ultimately उसको wax से cover करेंगे, and क्योंकि इसके अंदर मैंने paint नहीं किया है, this one I have only painted from sides and this side. Inside I did not paint it, but if you see, आपको कहीं पे भी इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर पेंट नहीं किया था या कोई पेंट छूट गया हो. राइट. सो do we have anyone who's making these diyas with us live right now? Wonderful. If you're making, great. If you don't have material, don't worry. You can definitely do this later also. And whosoever is making, once the class gets over, do send us the pictures. We would love to see your creativity. अब आपने देखा यहाँ पे मैंने एक बारी इसको कलर कर दिया है, बट वन टाइम कलर से at times you would feel the base is not completely covered, क्योंकि मिट्टी हमेशा थोड़ा थोड़ा सोखेगी पेंट. तो एक ही बार में अगर आप पेंट कर रहे हैं एक कोट में, तो उतनी फिनिश नहीं आएगी. सो आई वुड सजेस्ट टेक
the brush and put another coat on this. So I am painting this one inside. I'll leave few without painted wale also. Okay, just to make different options, because we have a lot of diyas and we have a lot of ideas in mind, so we can explore all. Now, if you are painting the bottom also, what will happen is you'll have to wait कि ये अच्छे से सूखे, because then आप पकड़ नहीं पाएंगे इसको. But when I'm not painting the bottom, what is the advantage? I can simply keep it, और जो balance है I can paint it like this. It becomes very easy. ठीक है. Um, Another suggestion, please use नो वाटर काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज जितना ब्रश आपका ड्राई रहेगा उतना ही कोट जो है वो अच्छा आएगा. इफ यू यूज टू मच ऑफ वाटर ऑन योर ब्रश, होगा क्या कि आपका पेंट जो है उतना ही पतला हो जाएगा. अक्रेलिक कलर यूज करने का रीजन ही ये है कि वी डोंट वांट अ वेरी थिन लेयर ऑफ पेंट. ओके, सो विल जस्ट लीव इट असाइड. कैन यू सी द मोमेंट यू हैव पेंटेड? अभी कुछ नहीं किया हमने, वी जस्ट पेंटेड दिस प्लेन. Look at the difference between both the diyas. Can you see? Do you think the painted version looks better? Or do you think the plain ones were looking much better earlier? So please comment and let me know, so that I also get to know you're listening, you're interested, you're still there. Because when you comment, it makes me feel, okay, yes, you're there. Okay, so I'm just coloring few of one shade, then I'll take another shade. All right, so while I'm painting these, कितने लोग हैं जो जिन्होंने अभी हमारा डिजाइनर कैंडल बिजनेस कोर्स नहीं किया? So do we have members here who haven't done the designer candle business course by Cow Candles yet? There are a lot of members who are existing students. There are a lot of members who are absolutely new. So let's just see. So if you haven't done it, you can just say no, so that I get to know. Okay, somebody said कि कुछ पेंट के साथ बनाइए और कुछ बिना पेंट के बनाइए. Okay, we'll just leave एक आधा यहाँ पे without paint and see how does that look. Maybe that's going to give a comparison कि कैसे लग रहा है ना? So just I'm going to keep this one aside. Okay. Now let's just take another color. See, so I have
painted this inside first. Now it's going to become a little difficult for me to hold this diya, but I think it's okay. वो आर्ट ही क्या जिसमें आपने हाथ गंदे नहीं किए, है ना? कितने लोग हैं जो अभी किसी एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं? These are acrylic colors. Okay, let's just keep this here. And how many of you are there जो ये सोच रहे हैं कि यार आई विश हमें भी कुछ आता होता, हम भी पार्ट ले लेते? Is there anyone who feels I really want to be a part of an exhibition, earn something, but क्या करें? I don't know. Wonderful. So all those people who are participating in exhibitions, great, all the best. I know you are professionals, you would know क्या करना है. All those people जिन्होंने कभी नहीं किया, this could be your product. Believe me, do this and come back and just drop me a message saying how was your experience. I would really love to know. You know, that one exposure you'll do, आपको वो इतनी सारी चीजें दिखाएगा, समझाएगा, और it's going to be an experience. Exhibitions, live stalls, live shops are amazing way to learn not just how to do business, but लोगों से बात करना, बाहर निकलना, जब आप उस चीज की तैयारी में दिनों तक लगे रहते हैं, यू नो all that excitement, all that nervousness, इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, आप सीखते हैं, आप 10 लोगों को अपने साथ खड़े हुए देखते हैं, वो कैसे अपना काम कर रहे हैं, बात करना कस्टमर से, लाइव बात करना ऑन द स्पॉट, जब आपके पास कोई आता है और कहता है कि अच्छा आप इतने में दे दीजिए, हम आपसे 2 लेंगे, 4 लेंगे, नेगोशिएशन. There are so many things these live classes, sorry, these live, exhibitions can teach you. You have no idea. If you are lucky enough to have some kind of exhibition going on nearby, do participate in that. It's awesome way to learn. Um, so somebody is asking, is it better to color all the diyas white first and then paint? See, it won't matter. सो आप बेस में कोई और कलर देके, अब इसके ऊपर अगर सपोज व्हाइट है और मैं इसके ऊपर दूसरा कलर करूं, आइडली इट वोंट मैटर. व्हाट विल हैपन इज प्रोबेबली आपका जो ऊपर कलर कर रहे हैं वो लाइट हो जाएगा. सो रादर देन दैट आई वुड सजेस्ट आप को जो डायरेक्ट कलर करना है वो कीजिए, बिकॉज अदरवाइज दो शेड्स मिक्स हो जाएंगे तो कलर चेंज होने का डर रहता है. सो व्हाइल दीज आर गेटिंग ड्राई, व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, ये वाला जो है इसमें आपने देखा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वाइट किया हुआ है. सो दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू पेंट. ये बहुत जल्दी सूख जाएगा. द बेस्ट पार्ट फॉर क्ले पॉट्स इज कि ये सूख बहुत जल्दी जाते हैं, एंड एक्रेलिक है तो उसका भी थोड़ा फायदा हो जाता है. So this is the box. These are Fevicryl acrylic colors. So I think I'm going to put some red color on the top. So abhi, if you are somebody who's already into art, I know there are a lot of people जिनका art जो है वो इतना खूबसूरत है कि you know
It's very difficult to match. So I'm not in competition with any one of you. If you are an artist, I'm sure you would do a great job if you are already an artist. But I'm just sharing few ideas here. I've seen people making amazing art, and अगर आप वो करते हैं, great. और अगर आप मेरे जैसे हैं जो you know जिनका हाथ शायद उतना साफ नहीं है आर्ट में, तो वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, आई एम 100% श्योर ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम बेसिकली पेंटिंग दिस बॉर्डर. ये जो कार्व्ड बॉर्डर है, मैं सिर्फ इस पे पेंट कर रही हूँ. अगर आप देखेंगे ये इनर लाइन जो है, आई एम नॉट पेंटिंग दिस राइट नाउ बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ पेंटिंग दैट विद अ डिफरेंट कलर सो दैट इट गिव्स अ शेप. So the edges, the carved edges, I'm filling with red paint. Okay. Any art needs lot of patience. ठीक है. So ये patience का काम है. अगर आप ये सोचें कि एक ही मिनट में सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है. ठीक है. और do we have any members in the class today जो फरीदाबाद और nearby areas से हैं? Anyone out here who's residing nearby? Anyone from Faridabad? So people from Faridabad, we are doing on 27th, we are doing a live class, an offline class for kids. And it's going to be diya making class. Age group hai 5 to 8. If you have anyone in your circle, you can enroll them. All the materials, everything will be given to them here itself. They don't need to carry anything. They just have to come and have masti with us. Just going to shift it a little bit. So I've given one layer outside wali, I've painted it. Inside, we'll just wait for 5-10 minutes and maybe some other paint will start. Okay. So now we know how are we going to paint our diyas. ठीक है, कलर कौन सा यूज करना है, ये सब आइडिया हमको हो गया है. सो कुछ जो मैंने दियास पहले से पेंट किए थे, लेट्स जस्ट स्टार्ट डेकोरेटिंग देम एंड सी व्हाट वी कैन डू. किस किस तरीके की ऑप्शंस हैं हमारे पास. इसको साइड कर देते हैं जब तक ये सेट होगा. This is dry. These are dry. Okay. So the first option, what we can do is we can uh, create a design with any pencil or any brush. ठीक है, यहाँ मैंने पेंटिंग ब्रश लिया है. So since ये white color है, so what am I going to do is I am going to use blue and red or blue or pink. Let's see.
ओके नाउ इफ अगेन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है और आप you can make different shapes and leaves and flowers, amazing. Mine is not that great, okay? So what am I going to do is, what I've done is I've just dipped the back side of the brush, or I'm going to start making small dots, ठीक है? और थोड़ा सा डिस्टेंस करके कर रही हूँ बिकॉज इसके बीच में मैं एक दूसरा कलर यूज करूंगी, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर सभी डॉट्स जो हैं सेम साइज की हो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि when you're doing it for the first time, the size of the dots it varies. कितना पेंट डिप करना है, कितना प्रेशर डालना है, आई थिंक 2-3 बारी आप करेंगे तो इट विल बी क्लियर। कोई भी चीज प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आ जाती है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज दैट डिफिकल्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट जो डॉट्स हैं वो हमने कर दी। If there's anyone who's still looking to enter into the class, you can share the link with them, any of your friends and families. These are people who are now texting that they want to, and somehow we're already live. So if there's somebody in your circle and you think you can help them, please go ahead and share the link. The link doesn't require any authentication. They just have to click and come in. So यहाँ पे if you see, I am adding a red dot. थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर बहुत ज्यादा पेंट लेंगे तो वो ड्रिप कर जाएगा। सो जस्ट अ स्मॉल डॉट एंड कीप योर दिया लाइक दिस। एकदम से अगर कई बार ऐसे करते हैं तो वो नीचे फैल जाता है। अगर पेंट आपका पतला है तो ये इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू लॉट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है? आपको जैसा डिजाइन अच्छा लगे आप वैसा डिजाइन पिक करेंगे। सो मैं यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और लास्ट में हम इन सब में कैंडल्स बनाएंगे, ठीक है? सो हियर आई हैव दीज स्टिकर्स easily available on any stationery shop. These are dot stickers. Studs बोलते हैं इनको, dot stickers बोलते हैं, okay? So I'm going to put these on one of the diyas, ठीक है? ये इस तरीके से आते हैं, इसमें अलग अलग शेप्स हैं। राउंड है, हार्ट्स हैं, गोल्डन कलर आता है, येलो आता है। यू कैन टेक एनी कलर यू लाइक, एनी शेप यू लाइक। इसमें साइजेस भी हैं अलग अलग। सो सिंपली मैंने क्या किया है, आई जस्ट एडेड देम ऑन द दिया। आई जस्ट शो यू, वेट, ठीक है? हल्का सा प्रेस किया है। इसमें ये सेल्फ एडेसिव होते हैं, इसमें ग्लू होती है, तो ये अपने आप इसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है? सो यहाँ पे थोड़ा सा ये just change the shape. स्टड स्टिकर्स, आई रियली डोंट नो इसका एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक नाम है कि नहीं है, बट मैंने हमेशा इनको स्टड्स बोला है। एंड यू इजिली गेट देम ऑन स्टेशनरी शॉप्स। सो व्हाट आई विल डू इज,
I'll try and share the links of things which you can buy from outside, like market, online market, and things like diyas and all. Definitely, I would suggest you to buy them from local vendors. Don't go for online, because यही तो हम चाहते हैं ना कि हम उनको सपोर्ट करें. अगर फिर हम ऑनलाइन खरीद लेंगे तो उनको सपोर्ट कैसे करेंगे? प्लस ऑनलाइन दियाज जो है वो एक्सपेंसिव होंगे. मोस्टली फैंसी दियाज आपको ऑनलाइन मिलेंगे. ठीक है, तो आप, do you see this? Such a basic, uh, you know, thing. It has turned the whole thing into a very different stuff. एकदम नया, एकदम डिफरेंट लगने लग पड़ा है. सो अभी इसको थोड़ा सेट होने देंगे, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे. नाउ here there is a bigger diya. I'm going to show this because इस पे थोड़ा सा, if I'll do something on this, it'll be more visible. So इसको अभी साइड कर रहे हैं. So this is a फेविकोल. ठीक है, दिस इज वाइट ग्लू. ये मोस्टली आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए स्पेसिफिकली है. यू कैन टेक रेगुलर फेविकोल ऑल्सो, राइट? एंड here I have some options of laces. You can select whatever you like. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ options हैं. ये किरर वाली लेस है. ये एक और गोटा पत्ती है. आप किसी भी तरीके की ऑप्शन जो आपको सुंदर लगती है या आपके पास है, आप वो ले सकते हैं. So I think I'm going to use this one. वैसे okay. So what Arzu has done is Arzu has basically done something very creative, which I think I'm going to use. So यहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे से I have small pieces of colored cloth. These are basically taken out of a lace only. So I think I'm going to use this first. And also I'm going to use some mirrors. So यहाँ पे इसके ऊपर मैं थोड़े से mirrors use करूँगी. Right? These are also some decorations. So let's just see हम क्या use करेंगे. I think मैं mirrors use करने वाली हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास round mirrors हैं, काफी सारी options हैं. Again, you can get them from stationery shop. I'll just start with this, and if I need more, I'll take them. तो यहाँ पे कुछ शीशे हैं. They are available online also, and they are available on stationery shops also. If you have a good art and craft shop, definitely they will have them. Okay, these are round shapes. You can take any shape you like. Now, right, let's just see क्या डिजाइन कर सकते हैं. I'm thinking how to place them. Maybe I think I'm going to place it like this, and iske upar I'm going to add a mirror like this. Okay, so let's just start.
So using a simple glue, I am fixing them and they will stay. They're not going to go anywhere. Just that you'll have to allow them little time to stick. ठीक है, थोड़ा सा इसको चिपकने का टाइम देना पड़ेगा आपको, बट ये कहीं नहीं जाने वाले. सो अब इमेजिन कीजिए, आप पूजा कर रहे हैं, आपके मंदिर में इतना कलरफुल दिया पड़ा हुआ है, जोत जग रही है. इट एनहांसेस द होल फील. तो ये एक लेस के बीच में से टुकड़ियां काटी हैं हमने कपड़े की, और फेविकोल के साथ इसको हम चिपका रहे हैं. आई होप इट्स क्लियर. और थोड़ा थोड़ा सा गैप देके मैं इन टुकड़ियों को इस दिए के ऊपर चिपका रही हूँ. मैं जानबूझकर बड़ा दिया यहाँ पे ले रही हूँ ताकि एक तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, एंड प्लस आपको थोड़ा देखने में आसानी होगी. ये कपड़े की एक टुकड़ी है, ये जहां से आपको लेसेस मिलती हैं मार्केट में किसी शॉप से, अगर आपके वहां पे कोई है, यू कैन बाय देम फ्रॉम देयर. एंड दिस इज द फेविकॉल. ओके, कैमलन की है, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, दे आर ऑल गुड. So just in case if you still want to see क्या यूज किया मैंने, दिस वाज द लेस. ठीक है, ये लेस थी जिसके बीच में से मैंने यहाँ पर कुछ पीसेस जो हैं इसमें से निकाल कर इस्तेमाल किए हैं. सो इस तरीके से इसको सिंगल सिंगल कर लिया है. सो यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है. So now I'm using these small mirrors and I'm going to fix them in between, यहाँ पे इनके बीच में. और इसको भी मैं फेविकॉल से ही लगा रही हूँ, नॉट यूजिंग एनी डिफरेंट ग्लू फॉर दिस. जब आप ऐसा कोई मटेरियल दिया के ऊपर लगा रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ेगा ड्राई होने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली आप इसको अगर यूज कर लेंगे कैंडल बनाने के, बहुत बारी जो मटेरियल है वो निकल जाता है, उतर जाता है, देन इट कैन बी एन इश्यू. एंड डोंट ऐड टू मच ऑफ ग्लू. अक्सर ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चीज यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. एवरीथिंग नीड्स टू बी इन द राइट प्रोपोर्शन. जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट इज इनफ. इतना सा मैंने हल्का सा, ओके, आप देखिए एक बूंद लगाया है इसके ऊपर, दैट्स इनफ. बस आप इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये चिपक जाएगी इसके साथ. ओके, सो फिलहाल अभी हमने सिर्फ इसको इतना ही ऐड किया है. नाउ इसका जो टॉप है वो हम ठीक करेंगे. ठीक है, लेट्स जस्ट फर्स्ट थिंक व्हाट वी कैन ऐड टू इट साइड से, बिकॉज खाली खाली लगेगा नहीं तो. Okay. So here I have another, you know, another lace which I think is absolutely appropriate size. इसकी चौड़ाई बिल्कुल सही है इसके लिए, तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स करूंगी. ओके,
Can you see? Can each one of you see? सबको दिखाई दे रहा है? Great. So I'm just going to measure the length कितनी चाहिए ताकि मैं उसके हिसाब से इसको काट सकूं. Otherwise ये बहुत लंबी है, then it's not easy to handle. I've just added little bit of glue on the side because ये जो lace है ये खुलती है, weaved है, तो इसलिए let's just turn it and यहाँ से मैंने इस पे पतली सी लेयर ऑफ फेविकोल लगानी शुरू की है. और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पे मैं और लेस लगाती और फेविकोल लगाती जाऊंगी. So let's start. तो ये चीज नीचे रहेगी इसकी. दैट्स हाउ आई वांटेड. अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आप उसको टर्न कर सकते हैं लेस को. मुझे जो अपनी लेस है वो उसका जो डिजाइन है वो इस तरीके से चाहिए. सो आई एम गोइंग टू फिक्स इट लाइक दिस. एंड while I'm putting it on the glue, I'm putting pressure ताकि ये इसके साथ अच्छे से चिपक जाए. ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा इसको प्रेशर देना जरूरी है क्योंकि मोटी चीज है, एकदम से लगाते ही वो पेपर की तरह इजीली नहीं चिपकेगी. ओके, यू कैन यूज हॉट ग्लू गन ऑल्सो. सो if you use hot glue gun, आप hot glue gun भी इन सब चीजों को चिपकाने के लिए यूज कर सकते हैं. फेविकोल मोस्टली इजिली अवेलेबल है, सबके पास मिल जाती है. So that's the reason I have opted for Fevicol, but you can use hot glue gun also. Okay. So what am I going to do is, क्योंकि ये लेस थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, पहले मैं इसको पूरा फिक्स करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू सिक्योर दिस विद लिटिल बिट ऑफ टेप ताकि ये जो अगले 15-20 मिनट इसको सूखने में लगेंगे ये बार बार उतरे नहीं. So whatever is extra, we'll chop it off. पहले हम इसको अच्छे से सब जगह से प्रेस कर देते हैं. So this I'm going to clean little later. पहले हमारा मेन फोकस है कि ये चिपक जाए अच्छे से. ठीक है, you can face this challenge because जब आपकी जो लेस है वो अगर थोड़ी मोटी होगी then it can take little time to stick, which is absolutely normal. कोई भी चीज मोटी अगर होगी उसको चिपकने में थोड़ा सा वक्त लगता है. So
यहाँ मैंने हल्की सी सेलो टेप ली है और इस सेलो टेप से मैंने इसको सिक्योर कर दिया है ताकि ये हिले नहीं। एंड आई एम गोइंग टू लीव दिस असाइड ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। सो इफ यू सी, if you can see this, you can see एक प्लेन सिंपल सा दिया जो है वो अभी बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। एंड थोड़ा सा मैं इसके अंदर कलर्स ऐड करूंगी थोड़े से, ठीक है, बिकॉज खाली खाली लग रहा है, मुझे लग रहा है। इफ यू थिंक नहीं लग रहा, यू मे फील फ्री नॉट टू डू दिस। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक लिटिल फ्लावर्स। ओके, आई थिंक बीच में ब्लू डालते हैं और आसपास हम थोड़ा सा पिंक डालते हैं, पिंक फ्लावर्स बना देते हैं। तो जस्ट गोइंग टू ऐड, जहां पे खाली स्पेस है वहां पे हल्का हल्का सा डिजाइन बना रही हूँ ताकि खाली खाली ना लगे। ओके, इफ यू थिंक आपको खाली खाली सुंदर लग रहा है, प्लीज फील फ्री टू लीव इट एग्जैक्टली लाइक what it is right now. You may not do anything more on this. And now I'm just going to make small flower. कई बारी बहुत सिंपल सी चीज बहुत सुंदर लगती है। सो फील फ्री, जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है आप वो कीजिएगा। सो इसको बहुत आराम से उठाते हैं, ठीक है। यू सी हाउ इज इट लुकिंग? बिल्कुल एकदम प्लेन दिया था और अभी कैसे हो गया। okay? एक काम करते हैं, एक और बड़ा वाला दिया डेकोरेट करते हैं एंड देन विल स्टार्ट मेकिंग कैंडल्स। ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैड ऑलरेडी पेंटेड। हाँ, ये इसका इनर वाला एक लाइन जो है उसको पेंट कर लेते हैं पहले, एंड देन let's just start making candles. Meanwhile, I'll start my wax. I'm going to take soy wax for all these diyas. ठीक है, मैं अपने दियास के लिए soy wax इस्तेमाल कर रही हूँ, 100% soy chunks. However, अगर आप सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं इसको, and if you want that the cost should not go way high, then please go ahead and use paraffin wax. It's absolutely okay to use paraffin for diyas. मार्केट में जो दियास मिलते हैं वो आपको पैराफिन में ही मिलते हैं, बिकॉज सोए डालते ही आपकी कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाएगी, है ना, एंड वी डोंट वांट दैट। So taking another brush and I'm taking blue color here. और इसकी जो अंदर वाली लाइन है उस पे I'm just going to make a small thin layer of blue color just to make this red also, you know, get highlighted. वरना अभी रेड जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा था, तो मैं हल्का सा इसमें ब्लू आउटलाइन बना रही हूँ क्योंकि इस मटके के अंदर भी, सॉरी, इस स्पॉट के अंदर भी एक लाइन है। I'm just going to highlight that with blue color. And don't worry, in case अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी पेंट जाता है, we are going to fill this with wax.
All right, so I've just given a thin line here. Okay, और फिलहाल हम इस कलर को बंद करते हैं एंड सो इसके ऊपर दो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं. सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू यूज स्टेंसिल्स. ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टेंसिल्स हैं. सो मैं स्टेंसिल्स यूज करूंगी टू पेंट दिस मटका. यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेंसिल्स है. यू कैन सी दिस इज लाइक अ दिया ओनली, है ना. कैन ईच वन ऑफ अस सी द स्टेंसिल्स क्लियरली? हमको सबको स्टेंसिल्स दिखाई दे रहा है. Great. So let's just make some space. And let me just fix the stencils क्योंकि stencils जो है okay, I'm just going to make इसका जो ऊपर का you know ये जो पत्ती है सिर्फ ये बनाऊंगी क्योंकि ये फ्लैट नहीं है. थोड़ा सा इसमें then there can be a challenge. So what I've done is मैंने इसको हल्का सा सेट कर लिया है. ठीक है, you can take a stencils of a smaller size also. That would make life even more easy. Okay, my stencils is little bigger than the size of the matka what I'm using, but you may feel free to use a different uh, stencils also. So here, let's see what colors options we have. I have golden, I have this green, yellow. Okay, yellow would be better. So यहाँ कुछ colors की options. I'm just trying to figure out if we can add little more color into it, है ना? Because the more the merrier. Color looks pretty. So once you have set your stencils, जहां आप इसको रखना चाहते हैं, आपने एक बार इसको set कर लिया, उसके बाद just take the color. Okay, this is not working. And you can use a sponge also. Make sure stencils अच्छे से tight है. Loose होगा तो design proper नहीं आएगा. यहाँ I think stencils थोड़ा सा बड़ा है इसलिए proper design नहीं आया. So what I'm going to do is I'm just going to show you a sample here on the sheet so that you can do it and we will decorate this with something else. Okay. So here, just keep the stencils, use the brush. Try not to take water because पानी से अगर पानी ज्यादा होगा तो वो stencils से leak कर जाएगा और so you can make designs like these. ठीक है. So now what else can we do? Okay, यहाँ पे stencils नहीं पूरा आ रहा, so we'll leave stencils. But we know कि हम stencils use कर सकते हैं. Let's see the other option. Okay. So I'm taking this less and decorating this.
तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाली साइड पे what am I going to do is I am going to use these. Do you know what this is? Can you see? Can you comment and tell me ये क्या है? Can everybody see what this is? Just drop a comment and let me know ये क्या है, so that आपको पता है कि ये क्या है, और आपको अगर बाय करने हैं तो कहाँ से बाय करने हैं आपको वो भी मालूम होना चाहिए, है ना? So we are going to use pista shells for this diya. So यहाँ पर I am just going to add this. ठीक है, इसका टॉप जो है मैं थोड़ा सा एक टिपिकल पूजा लुक वाली कोई भी थाली, कोई भी चीज होती है, इट हैज दिस, माता रानी की चुनरी भी जब हम लेते हैं, इट हैज दिस किरण ऑन द साइड्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दिस फर्स्ट, and then we are going to use pistachios के shells. Meanwhile the wax is melting. So in order to melt your wax, use a double boiler. ठीक है, जो लोग नए हैं, स्पेशली आपके लिए, आप वैक्स को मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे. डबल बॉयलर क्या होता है? एक बर्तन के अंदर आप पानी लेंगे, उसके अंदर आप पानी को उबालेंगे, और उबलते हुए पानी के अंदर दूसरे बर्तन में वैक्स डालकर रख देंगे, ताकि आपकी वैक्स जो है धीरे धीरे, जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है वैसे ही वो भी गर्म होती जाए और मेल्ट हो जाए. ठीक है, डायरेक्ट गैस पे या माइक्रोवेव पे हम वैक्स को गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट गर्म करेंगे तो वैक्स के जलने का डर रहता है. ठीक है, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जहां पे आपको आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द पिस्ताशियोस फर्स्ट. माय हैंड्स आर टू डर्टी, इट्स जस्ट नॉट, मेरे हाथों की फेविकोल से ही वो वापस आ रहा है. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस फर्स्ट एंड देन वी विल ऐड लास्ट में. सो just adding glue to the pistachios, or you can add glue नीचे, जो भी आपको आसान लगता है, and then you can start sticking it. The next time somebody in the house is eating pistachios, please ask them not to throw the shells, because you can use them for craft.
So while that pistachio shells will get dry, I've just kept it on the side. This is what a double boiler looks like. ठीक है, एक बॉयलर में पानी है, दूसरे में वैक्स है. इस गर्म पानी की हीट से वैक्स जो है कुछ देर में गर्म हो जाएगी और पिघल जाएगी. सो आई एम यूजिंग इंडक्शन हियर. यू कैन यूज गैस ऑल्सो. क्योंकि मैं डेस्क पे काम कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंडक्शन है. मैं इंडक्शन यूज कर रही हूँ. आप चाहें तो आप गैस के ऊपर डबल बॉयलर रख सकते हैं, बट प्लीज डोंट यूज डायरेक्ट हीटिंग मेथड बिकॉज दैट्स नॉट गुड. Okay, so let's just pick up our diyas and let's start creating candles in them, right? So जो भी दियास अभी तक हमने डेकोरेट किए थे, आई एम एडिंग all of them at one place and I'm going to start making candles. तो कैंडल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? कैंडल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? Can any one of you comment and tell me what is the first thing you need to do when you're making a candle? So ये हमारे containers हैं basically, है ना? So पहले आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? वेरी नाइस. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वी नीड टू विक आर दियास. ठीक है, सो इन कंटेनर्स को हम विक करेंगे सबसे पहले. राइट, विक करना क्या मतलब होता है? इनके अंदर हम धागा, बत्ती या कैंडल वर्ल्ड में जिसको हम विक बोलते हैं उसको लगाएंगे, बिकॉज उसके बिना तो ये बर्न नहीं कर पाएंगे. राइट, सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट आर विक बर्न्स, आर कैंडल बर्न्स, वी नीड टू इंश्योर कि हम इनके अंदर ये विक लगाएं. और मैं ये यहाँ पर कॉटन की विक्स ले रही हूँ. इनके नीचे मेटल सस्टेनर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं. सो आई एम गोइंग टू एड देम टू द दियास. सो बड़े वाले दियास के अंदर आई एम एडिंग 2 विक्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग कर चुकी हूँ. सिंगल विक के साथ ये प्रॉपरली बर्न नहीं होगा, इसलिए मैं 2 विक ऐड करूंगी इसके अंदर. छोटे दिए जो हैं वो इजिली सिंगल विक के साथ चल जाएंगे. ठीक है, so before we proceed further, I want to show you something. These are stickers. ये stickers हैं. और अगर आप देखेंगे शुभ दीपावली, लक्ष्मी के चरण, लक्ष्मी जी, काफी सारे अलग अलग डिजाइन हैं, ओम है. इनमें से आप ये भी लगा सकते हैं, बट देन इफ यू वांट यू कैन जस्ट मेक देम फॉर डेकोरेशन. सो इफ यू सी, यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी के जो चरण हैं वो लगाए हुए हैं. ठीक है, if you want you can use them outside on the diya itself and fill this with wax. So this one I'm not going to fill with wax. This was just to show you. I'm just going to keep it on the side. This looks very pretty. बहुत ही सुंदर stickers हैं ये. So let's just wick our diyas. So आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं. आप अगर मोम के साथ इसको स्टिक करते हैं, if that's what you've been doing, you can do that also. So what am I going to do is I'm going to wick this with 2 wicks. 2 wicks ऐड कर रही हूँ मैं इसमें. And immediately before I remove my hand, I'm going to add a wick holder just to ensure that the wick doesn't move and stays at the place. Okay, इसको सूखने में 1-2 मिनट लगेंगे क्योंकि ग्लू है, थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, सो विक होल्डर जो है विक को अपनी जगह पे स्टेबल रखेगा, हिलने नहीं देगा. We'll share all the material description. If you want, I can give you the details from where to get, and you can easily order them.
सेकेंड विक, अगेन फटाफट से विक होल्डर लगा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट माय विक टू गेट टेढ़ा मेढ़ा. विक सीधी रहना कैंडल के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है because if your wick is not appropriate, not proper, not fixed right way में, your candle is going to become a disaster. Okay. तो जितना मर्जी सुंदर दिया बना लीजिए, अगर आप बर्न करने के लिए बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विक आप लगा रहे हैं वो आपकी दिया के लिए एकदम परफेक्ट है. ओनली देन योर दिया इज गोइंग टू बर्न. अदरवाइज फिर वो सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएगा, बर्न नहीं हो पाएगा. And for this I'm using these wooden wick holders simply because इनकी लेंथ जो है वो काफी अच्छी है. दियास थोड़े बड़े होते हैं. These diyas are bigger, so I'm using wooden wick holders. Normally I use those metal ones, but metal ones इसमें टिकेंगे नहीं क्योंकि ये बड़ा साइज है काफी. And a wick holder makes your life so easy. So जब तक मैं बाकियों में wick लगा रही हूँ ये सूख जाएगा. ठीक है. All right, when you are wicking your containers, always remember that your wick should be little longer. Yes, of course, मेरी काफी लंबी है because uh, I use 7-inch wicks as a you know regular this thing. But आपको अपने कंटेनर के हिसाब से बाय करनी है, तो अगर 2 इंच ऊंचा कंटेनर है तो आप 3 इंच की विक ले सकते हैं. बिल्कुल कंटेनर की जितनी विक नहीं लेनी है, हमेशा थोड़ी सी बड़ी विक लेनी है क्योंकि अगर आपने कंटेनर की जितनी विक ली तो होगा क्या कि आपका कंटेनर के अंदर अभी आपको वैक्स पोर करनी है, आपको पूरी उसको सेट करना है. वो सारा प्रोसेस जो है फिर वो आप इजीली कर नहीं पाएंगे. विक जो है बार बार टेढ़ी हो जाएगी, टूट जाएगी, एंड वी डोंट वांट दैट. So I'm using this glue for all this. I know a lot of people use hot glue gun. You can use these wick stickers also. You can use whatever you're comfortable with because most of the people here are candle makers. So I'm not going to emphasize a lot on this. I know आप लोग already जानते हैं कि कैसा the whole thing works. So तो लास्ट के 2 दिए हैं उसके अंदर भी हम. तो somebody said प्लेन रहने दीजिए, सो एक प्लेन भी बना लेते हैं, राइट. ऑलराइट, सो काफी सारे दिए जो हैं वो विक हो चुके हैं ऑलरेडी. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर पोरिंग. सो वैक्स जो है मेल्ट हो गई है एंड I'll just show you how it looks. This is how your soy looks, little yellow in color. हल्का सा पीला पीला सा रंग होगा इसका. ठीक है. So I'll start pouring with my first दिया. टेक योर टाइम. बहुत ऊपर से पोर नहीं करना. पोर इट आराम आराम से.
और जहां तक आप चाहते हैं कि दिए में ऊपर तक वैक्स दिखाई दे वहां तक इसको भर दीजिए। ओके, just moving it a little bit closer. I'm just going to use a funnel because can everybody comment and confirm if you can see clearly, if you can listen clearly? Because I just want to confirm कि आपको आवाज आ रही है, आप देख पा रहे हैं। So अभी मैं जो यूज कर रही हूँ इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं फनल, पोरिंग फनल। दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग टूल क्योंकि दिस मेक्स योर लाइफ वेरी इजी, स्पेशली जब आप इस तरीके से छोटे कंटेनर्स के अंदर वैक्स पोर करते हैं। बहुत आसान हो जाता है आपका काम। अदरवाइज जैसे अभी आपने देखा मैं बड़े जग के साथ पोर कर रही थी तो काफी हैवी हो जाता है और वो उसको टिल्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस मेक्स लाइफ रियली इजी। एंड दीज आर द मेटल विक होल्डर्स। ठीक है, आई फिल्ड इट नाइसली। So just in case if you want to buy the funnel also, you can just comment and let me know so that I can drop the link. I'm using 100% soy wax, soy chunks for this candle. As I said, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव रखना चाहते हैं, then you may go ahead with paraffin wax क्योंकि अगर आप सोए यूज करेंगे 100% तो वैक्स जो है एक्सपेंसिव है, आपकी कॉस्टिंग जो है ऊपर चली जाएगी। एंड आई एम श्योर फिर थोड़ा सा आपको क्लाइंट्स भी वैसे ही देखने पड़ेंगे तो मुश्किल हो जाता है, राइट? नाउ यू विल हैव टू लीव these diyas for at least the smaller ones 2 घंटा, द बिगर वंस एटलीस्ट फॉर 4 to 5 hours। ठीक है, छोटे दिए आप तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, इसी तरीके से मूव नहीं करने बिल्कुल भी। एक बार पोर कर दिए फिर नहीं हिलाना इसको। और जो बड़े दियाज हैं उनको आप 4-5 घंटे के लिए इसी तरीके से रहने दीजिए, इनको बिल्कुल हिलाइए मत। लेट देम रेस्ट जहां पे आपने रख के पोर किए हैं वहां पे। और जब ये पूरे तरीके से सेट हो जाएंगे तो इस तरीके से आपके जो दिया है जो इस तरीके से एकदम प्लेन, एकदम सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो यू नो they are going to be like this. So we'll take the questions now in another 1 or 2 minutes. Before we do that, uh, I just quickly want to understand your feedback about the class. So we're going to leave all these diyas to get solid, get set. ठीक है, इनको अब अच्छे से सेट होने देंगे और जब ये सेट हो जाएंगे तो सिजर्स या आप विक ट्रिमर लेकर जितनी भी एक्स्ट्रा विक है इनकी, राइट, जो एक्स्ट्रा विक है उसको आप ट्रिम कर देंगे एंड योर दियाज आर एब्सोल्युटली रेडी, राइट? सो इन दियाज को आप कभी भी जला सकते हैं, कहीं पे भी जला सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ होल रेंज ऑफ रिटर्न गिफ्ट्स फॉर समबडी इन द फैमिली और इन योर फ्रेंड सर्कल या आपके खुद के किसी ओकेजन के लिए। सो आई होप you like the workshop and I look forward to see you somewhere in the future. Do subscribe the channel and keep commenting, keep sharing your love. Thank you so much. God bless you. Have a great festival season. Bye bye.